So, very good morning to all of you and welcome to Excellency IAS. Friends, after going through the first chapter, that is national symbols, and the planning that is taken by Mr. Binay sir, today we are going to take up a chapter that is land and the people. This chapter is very important for your the geography syllabus, and you should enrich your the geography, that is whatever you read from the information from the India yearbook. This is an important chapter, so the questions can possibly asked from this chapter. So let us begin our today's class. So now friends, when you read this chapter land and people, you also read the class 11th textbook, that is the physical geography and Indian geography, that is class 11th NCERT books, and human and economic geography, that is class 12th NCERT book. So India yearbook begins from here, that it talks about the physical features of India. This is the physical map of India. You should develop the habit to read the physical map of India. Okay. The India yearbook begins from here, that mainland of India is divided into the 4 regions. India के mainland को 4 regions में divide किया जाता है. And what are the regions? First it is the mountains, second is the plains, third is the plateau, and fourth it is the desert area. The fourth is the desert area. Okay, so when we say the mountains, it basically talks about the Himalayas and the northeastern hills or northeastern mountains. Okay, the plains, that is by the Indus, Ganga और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो प्लेन्स बनाता है, दैट इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. प्लेटो की बात करते हैं, सो प्लेटो इज ए स्टेबल लैंड मास, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रेंजेज हैं लाइक द अरावलीज, विंध्याचल, सतपुड़ास, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सारे एक टेबल लैंड मास और एक स्टेबल लैंड मास बनाता है, दैट इज कॉल्ड द प्लेटो. एंड डेजर्ट एरिया, दैट इज अराउंड द रन ऑफ कच्छ, that is little desert and greater desert. So the mainland of India comprise of the 4 different regions, that is the mountains, that is great mountains, the plains, plateau and desert area. Okay. In the Himalaya system, in geography you have studied in comprehensive way, but we focus on that India yearbook facts. Himalayas, that क्या important facts है कि in the Himalaya system number of ranges are there. It extends from that west to east. There are the 2 extremities, that is called the at the Nanga Parvat and at the Namcha Barwa. यहाँ पर क्या है, Namcha Barwa, and here it is the Nanga Parvat. So at Namcha Barwa and Nanga Parvat 2 sharp bends हैं हिमालयाज पे, 2 क्या है, sharp bends हैं, and these bends are called syntaxial bends. क्या बोलते हैं इसको, the syntaxial bends. So this is your first fact you read. So syntaxial bends, that at the extremities of the Himalayas, that the 2 syntaxial bends हैं, and at the Nanga Parvat and at the Namcha Barwa. Namcha Barwa at Arunachal Pradesh. Getting my point? Now, जो length है, that is west to east, इसको क्या बोलते हैं, axial range of Himalayas. So axial range of Himalaya is around 2500 kilometers. ठीक है, and width of Himalayas around that 240 से 320 kilometer. So India yearbook say that range is 2400 kilometer, width is 240 से लेके 320 किलोमीटर. ये जो एंटायर सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड हिमालय सिस्टम, जिसमें जो रेंजेज हैं, दैट इज द हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ठीक है, और इधर ट्रांस हिमालय मिलता है. सो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक ये सारे मर्ज हो जाते हैं टुवर्ड्स द अरुणाचल हिमालयस. और इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यू गेट द नंबर ऑफ हिल्स, लाइक इन मेघालय यू विल गेट गारो, खासी, जयंतिया हिल्स. फिर कुछ नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेड हिल्स मिलते हैं लाइक पटकाई बूम, नागालैंड हिल्स, मणिपुर हिल्स, लोसाई हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, ठीक है, और ये जो दिस आल्सो एक्सटेंड्स अप टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो व्हाट द फैक्ट्स यू शुड रिमेंबर, दैट हिमालयन सिस्टम देयर आर द 2 syntaxial bends, axial range is 2400 kilometers and it extended and it meets and merges in the northeastern Himalayas. यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया हिल्स you get, then you will get the number of the northeastern hills. These are also called पूर्वांचल hills. क्या बोलते हैं इसको, पूर्वांचल hills. हम लोग इसको बाद में देखेंगे. Now come back to the plain area. This North Indian plain, okay, this is called plain area. So plain area, it is made up of the 3 river system. क्या याद रखने हैं, इंडस रिवर सिस्टम,
गंगा रिवर सिस्टम प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. सो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में इसको तीन पार्ट what we can divide it into that is called Punjab and Haryana plains, then Ganga plains, that is the Brahmaputra plains, it extended up to Assam regions. ठीक है. So North Indian plain is divided into the Punjab Haryana plains, Ganga plains and Assam plains. ठीक है. और कुछ एक्सटेंट तक राजस्थान में भी जाता है, that is also the Rajasthan plains बोलते हैं. When we talk about the peninsular block, the peninsular blocks में बहुत सारे हिल्स आते हैं, बहुत सारे रेंजेज हैं, लाइक अरावली रेंजेज, लाइक द विंध्याचल रेंजेज, सतपुड़ा रेंजेज, एंड हियर इट आल्सो इंक्लूड द प्लेटोज लाइक छोटानागपुर प्लेटो. इट आल्सो इंक्लूड्स द मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग, देन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. इसके अलावा और भी बहुत सारे अपलैंड्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स होते हैं. सो हियर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्हाट यू रीड, you have to keep in mind this peninsular block is a stable block and it is a table shaped block. ठीक है, it is a stable and it is table shaped block. वेस्टर्न फ्लैंक में तुम्हारे वेस्टर्न घाट्स हैं एंड इट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न घाट्स हैं. तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहां पर मिलता है? एट द नीलगिरी हिल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट कहां पर मिलता है? एट नीलगिरी हिल्स. और ये जो वेस्टर्न घाट्स है इट एक्सटेंड्स अप टू द कार्डामम हिल्स. ये कहां पर? It extended up to the Cardamom Hills. ठीक है, Western Ghats and Eastern Ghats meet at Nilgiri Hills and Western Ghats extends up to the Cardamom Hills. ये जो ईस्ट कोस्ट के अलोंग जो ये हिल रेंजेज हैं इसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है. एंड येट हियर दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का रिलीफ ईस्टर्न घाट से थोड़ा ज्यादा होता है. ओके, when we talk about desert, so desert is around the run of Kutch. So little desert and the greater desert. So little desert और greater desert दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. So now let us move and take some another facts. So what is the geographical area of India? The geographical area of India, it is a fact and it is important. So entire paragraph, entire box is very important. You must remember all things. So 32,87,263 square kilometer and on the basis of area, India ranks 7th in the world. So India का rank क्या है? This is the 7th in the world. Latitude and longitude, you have to remember what is the latitude. 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. सो दिस इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. एंड इंडियन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहां से पार होता है? दैट इज 82.5 डिग्री, जो आपको याद रखने की जरूरत है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस, दैट इज व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट. कितना इंडिया का एक्सटेंट है, कितना डिस्टेंट है. सो नॉर्थ टू साउथ कितना होता है? दैट इज थोड़ा लंबा है, दैट इज योर द 32-14 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट दैट इज 29-33 किलोमीटर. ये फैक्ट है, याद रखिएगा. दैट इज नॉर्थ टू साउथ इट इज 32-14 एंड ईस्ट टू वेस्ट दैट इज 29-33 किलोमीटर. इफ यू टॉक अबाउट लैंड बाउंड, लैंड फ्रंटियर, लैंड बॉर्डर, so it is 15,200 किलोमीटर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर. इंडिया बॉर्डरिंग इट्स बॉर्डर विथ सम ऑफ द फॉरेन कंट्री. कौन कौन से? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान. एंड इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स. ठीक है, सिंपल है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 हो गया. देन सेंट्रल एंड दैट नॉर्थ ईस्ट जोन. ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट जोन. So here is a table that India bordering countries. So India बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है and this is a very important fact कि what are the states actually touching the boundary. So here Assam, West Bengal, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. चाइना के साथ गेस करो, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम. विद पाकिस्तान, जेके, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात. विद नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम. विथ म्यांमार दैट इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, भूटान, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, and with the Afghanistan, that is Pakistan occupied Kashmir. Okay, so these are the border countries, and along with this border country, what are the states are actually making the borders. So this is a very important information. You must keep it. Now friends, I have compiled few of the maps. You must do the map practice at home. Okay, what are the states, on the states के boundaries,
कौन से टचिंग स्टेट्स हैं, यू कैन डाउनलोड आउट द PDF एंड यू कैन प्रैक्टिस एट होम. So like what are the river system, like this is your Indus river system, okay, then here is the Ganga river system, then you will get like the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. So you do the exercise at home, okay, ये करना पड़ेगा आपको, otherwise you cannot solve the questions because the questions can ask like that, okay, where that location of the Banas river, what is the locations of the Mahi river, okay, what is the locations of the Chambal river, Godavari, Krishna, Kaveri. Also organize the rivers in north to south directions, orientation. So such type of question can be framed. You should be well prepared. You also do practice the ranges with respect to the physical map of India. Okay, these are the very, very important. You purchase the Oxford, the Atlas, and also practice a lot at home before appearing at the examination hall. Okay, before entering into the examination hall, you practice a do lot. Okay, so let's move and take further concepts. Now friends, let's talk about the geological structure of India. So when we say the geological structure of India, मतलब on the basis of ages. So जो broad the landforms हैं, सबसे पहले क्या बना है? That is the plateau. Then it is your the mountain, that is Himalaya system, and then it is your the North Indian plains. So this is the geological chronology. First it is the plateau, that is peninsular plateau was formed, इसलिए इसको stable land mass बोलते हैं. Then it is the Himalaya system, these are called the fold mountain. Even the Himalayas are active और अभी भी इसकी height बढ़ रही है. So Himalaya system, and then after the plains were formed with the depositions made by the river systems like Indus, Ganga and Brahmaputra system. ठीक है? So the geological regions broadly follow the physical features and may be grouped into the three regions, that is called Himalayas, Indo-Gangetic plains and the peninsular silt or peninsular blocks. When we talk about the Himalayas, so कुछ basics आपको जानने चाहिए. If we the Western Himalayas and Eastern Himalayas, ठीक है, Western Himalayas और Eastern Himalayas. So in the Western Himalayas, this extends along the mountain chain from the Western Nepal, that is West Kali Gandaki Valley, through UP, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir and northwestern India, northern Pakistan, and then southwest along the mountains that in the border region between India and Afghanistan. Okay, so ये हिमालय एक arc shape का है. Okay, if you look at the Himalaya, arc shape का मिलेगा. So this is the western Nepal से शुरू होके इधर तुमको western Himalayas मिलेगा. And the western Himalayas, that what are the important? This is an important fact. Here you will get the tree like the blue pine, spruce, the silver fir, junipers, coniferous देवदार and चीर पाइन. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं. When we say the East Himalayas, the Eastern Himalayas अरुणाचल पे जाके मर्ज हो जाता है. यहाँ पर बहुत छोटे छोटे हिल्स मिलेंगे, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलेगा, डाइसेक्टेड मिलेगा. सो फर्स्ट इट इज, व्हाट इज द लोकेशन? इट इज लोकेशन बिटवीन द सेंट्रल नेपाल दैट इन द वेस्ट टू द म्यांमार इन द ईस्ट. ये म्यांमार तक एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि रखाइन हिल्स तक इसका एक्सटेंशन है. सो ऑक्युपाइंग द साउथ ईस्टर्न तिब्बत इन द चाइना, okay, Tibet regions, and the Sikkim, northern Bengal, Bhutan and northeast of India. So geography में you must have read these facts. Now Eastern Himalayas में, that is it includes the Darjeeling Sikkim Himalayas. The temperature you will find that it is 20 degree Celsius के आसपास, rainfall 500 millimeter के आसपास. And Eastern Himalayas can be divided into 4 distinct regions. First, the Darjeeling Himalayas. Second, Sikkim Himalayas. थर्ड, भूटान हिमालय, एंड फोर्थ द अरुणाचल हिमालय. फ्रेंड्स, जब फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आप पढ़े होंगे, दैट इज देन यू मस्ट हैव रेड अबाउट दैट ऑल द क्लासिफिकेशंस. सो दार्जिलिंग हिमालय, सिक्किम हिमालय, भूटान हिमालय एंड अरुणाचल हिमालय. सो दिस इज द 4 डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द ईस्टर्न हिमालयज. ईस्टर्न हिमालय इज वेरी बायोडाइवर्स रिच एरिया. सो इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है? देयर आर द 2 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन इंडिया. एक द वेस्टर्न घाट्स and second is your northeast Himalayas. So this region has been declared as a biodiversity hotspot. So biodiversity hotspot, who had given the concept of biodiversity hotspots? It is Norman Myers. In ecology you must have read. Okay, so Norman Myers had given the concept of the biodiversity hotspot. And India में कितने biodiversity hotspot हैं? 2. एक वेस्टर्न घाट्स पे है एंड सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय. सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उस रीजन को बोलते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी काफी अनरिच हो और इंडेमिक स्पीसीज हो. एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी कन्फाइंड हो, इसलिए उनका लॉस का थ्रेट ज्यादा होता है.
इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं. एंड वन लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया. दैट इंपॉर्टेंट ट्रीज दैट इज कॉल्ड फ्लोरा की बात करें, सो व्हाट आर द फ्लोरा here? Important, you get the maple, rhododendrons, alder, birch, oaks, okay, lauren, and the dwarf willows. So these are the significance of the eastern Himalayas. Now let's move to take the further concept. Now friends, what is the longitudinal division of Himalayas? मतलब north to south जब जाओगे according to height, so what is the division? So सबसे नीचे क्या मिलेगा तुमको? शिवालिक्स. Then what you get? That is lesser Himalaya. Lesser Himalaya को ही बोलते हैं हम लोग middle Himalayas. Okay. Then you will get the Trans Himalayas. Trans Himalayas, that is northeastern side. And then so सबसे ultimate peaks पे you will get that is Greater Himalayas. So the Greater Himalaya, then Trans Himalaya, then Lesser Himalayas, and then the Shivaliks. So Greater Himalaya is also known as Himadri. Then Lesser Himalaya or Middle Himalaya, it is called the Himachal. And सबसे नीचे क्या मिलेगा? Shivaliks. ठीक है. So Greater Himalaya, Lesser Himalaya, Shivalik, and then you get the Trans Himalaya. So Trans Himalaya, you will get the cold deserts. That in the Trans Himalaya, you will get the cold deserts. We will see subsequently. So Greater Himalaya में जो ranges हैं, वो like the Jaskar ranges you get. Okay, Jaskar range. In the Himachal, that you will get, here you will get the Pir Panjal. What? Here you will get the Pir Panjal. Okay, and the Pir Panjal में बहुत important pass है, that is the Banihal Pass and the Rohtang Pass. ठीक है, Banihal and Rohtang Pass you will get in the Pir Panjal. In the Shivaliks, you will get the number of the dunes. ठीक है, और Shivaliks की height काफी कंड्यूसिव है, इसीलिए द ब्रिटिशर्स वर अट्रैक्टेड टू डेवलप द रिसॉर्ट्स एंड हिल स्टेशंस हियर. द रिसॉर्ट्स एंड हिल स्टेशंस हियर. सो द कॉम्प्रिहेंसिव you must read for your the geography textbook. You prepare this chapter very comprehensively. Greater Himalaya, Lesser Himalaya, Shivaliks, and here Greater Himalaya, what are the important pilgrimage places, what are the ranges, you must read all these. Okay, that in the Middle Himalayas, that is the Lesser Himalayas, so what are the important things, what are the hills and what are the ranges you will get, and in the Shivaliks, what type of formations are predominant. So now let's move and take some about the Trans Himalayas. So friends, when you read the Trans Himalayas, you focus on two important things, that is the Karakoram range. The first is the Karakoram range and second is your the Ladakh plateau. Okay, the Karakoram range and the Ladakh plateau. So Karakoram range को क्या बोला जाता है? It is called third pole of the world, or it is called backbone of the Asia. And Karakoram range acts as a water divide between the Tarim river system and the Indus river system. Water divide between Tarim river system and that Indus river system. Karakoram range is called the third pole of world. It is called third pole of world or backbone of Asia. ठीक है, it is also known as backbone of Asia. Why it is called backbone of Asia or third pole of the world? Because it has the number of glaciers. इसमें बहुत सारे glaciers के deposits हैं और कुछ important glaciers के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे. Now, so with respect to the Karakorams, three things. It is acts as a water divide between Tarim and Indus river system. Third pole of the world, that the river reservoir of the glaciers. And when we talk about the Ladakh, so Ladakh plateau is divided into 4 different sections that you can remember with the trick, that is called El-Das. What is? Linjitang, Dipsang, Akshai-Chin and Soda plains. These are the 4 important divisions of the Ladakh plateau. Linjitang, Dipsang, Akshai-Chin and the Soda plain, that is El-Das. This is the trick. Okay. Now friends, one of the very important topic that is about the important passes in the Himalayan system. Okay. So इसको आप याद रखना, इसको रट्टा मारना है. Okay. So what are the passes? You will get the direct question from here. So it is very, very important. So in the Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. In the Jammu Kashmir, what are the passes? Burjila and Jojila. Okay, in Himachal Pradesh, that is Baralachala and the Sipla, and Uttarakhand, that is Elementi. This is a trick. So what is that Elementi means? L for the Lipulik, that M for the Manala, N for the Nitila, and T for the Thagla. Okay, so that
that is called Lipulek Pass, Manala Pass, Nitila Pass and Thagla Pass. When you reach the Sikkim, okay, that is in the Sikkim you will get that Nathula Pass and the Jilepla Pass. And in Arunachal Pradesh you will get the two important passes, that is Bumla Pass and Bomdila Pass. Okay, याद होगा, that is in the Jammu Kashmir, that Burjila and the Jojila Pass. Then Himachal Pradesh you will get the Baralachala Pass and the Sipkila Pass. And you get that Uttarakhand you will get that Elementi, okay, that is called Lipulek, Manala, Nitila and Thagla. Then you will reach to the Sikkim, you will get the Nathula Pass and the Chelepla Pass. Then when you reach the Arunachal Pradesh, you will get the two pass, that is called Bumla and Bomdila Pass. Friends, you must depict all the passes in the map and you must practice at home. Okay, this is very important. That questions may be very potential that one of the options in your question can be directly from here. Okay, so it's your duty to do exercise at home. So let's move further. So friends, whenever you read the northeastern hills, जिसको पूर्वांचल हिल्स भी बोलते हैं, so north to south orientations में जब आप मूव करोगे, then you will get a number of hill ranges. So northeastern में इसको याद रखने का एक ट्रिक है, that is your PNB MLM and then T. So PNB MLM. So P is the Patkai boom, N for the Naga hills, P for Bareil ranges, that M for Manipur hills, that L for Lusai hills. It is also known as the Mizo hills. And T is the Tripura. So सारे northeastern states में when you move you will get all such ranges, that is PNB MLM, and these are collectively called Purvanchal hills. So these are called Purvanchal hills. उसी तरह से जब आप मेघालय में मूव करोगे then you will get the Garo, Khasi, Jaintia, Garo, Khasi, Jaintia. Getting my point? So Garo, Khasi, Jaintia के बाद you will get the Rengma. Okay, Mikir Rengma, दो चीज मिलेगा यहाँ पर आपको, and you will get the PNB MLM, that is Purvanchal, that is Patkai Boom, Naga, Bareil, Manipur, Lusai, Mizo and then the Tripura hills. Okay, northeastern region में that each of the जो hills हैं that is dominated by the tribes. So बहुत से tribes भी मिलते हैं and on the basis of even the tribes the hills are named. So कुछ important west to east order में tribes आपको मिलेगा like Monpa, Dafla, Abhor, मिस्मी, नीसी, नागा. ठीक है, मोनपा, डफला, अबोर, मिस्मी, नीसी, नागा. उसी तरह से कुछ हिल्स के भी नाम हैं. जब आप हिमालय में इसे मूव करोगे देन यू विल गेट दैट ट्रिक इज डी मैम. क्या क्या मिलेगा, दैट इज डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी. ये वेस्ट टू ईस्ट है फ्रेंड्स. ओके, आप याद रखना. सो ऑर्डर ऑर्गेनाइज करना हो तो यू विल गेट लाइक दैट. सो यू रिमेंबर डफला, मिरी, अबोर एंड मिस्मी. और ये सारे क्या हैं, ट्राइब्स हैं. ओके, और ये भी वेस्ट टू ईस्ट ऑर्गेनाइज्ड हैं. मोनपा, डफला, अबोर, मिस्मी, निसी, नागा. गेटिंग माय पॉइंट? सो एंड सेकंड ट्रिक इज योर डी मैम. So Dafla, Miri, Abor, Mismi. Okay, so about the northeastern Himalayas and the Purvanchal hills, ये सारे facts आप याद रखना. The first thing is the PNB MLM, Garo Khasi Jaintia, along with this nomenclature of the tribes और कुछ hills के नाम like Dmam, Monpa, Dafla, Abor, Mismi, Nisi, Naga. All you will get from your NCERT book. Okay, but most important thing is that how you recall all the things and how you organize the things. So the India yearbook helps here. Okay, now let's move further. Now friends, अब हम लोग दो important tricks की बात करेंगे. That is in the Trans Himalayas. Trans Himalaya कहाँ locate करता है? That is northeastern part. Okay, so northeastern Himalaya system में you also have read in your the geography textbook. यदि नहीं पढ़े हैं, you must read because this is the fundamental chapter of geography. Trans Himalaya, why it is famous? यहाँ पर दो important चीज पे focus करना है. One is your the Karakoram range and second, and that is the Ladakh plateau. So what is the highest peak of Karakoram range? That is K2. Okay, Godwin Austen. ये आप याद रखोगे. So Karakoram range it is called the third pole because number of glaciers मिलते हैं और important glaciers के नाम आप याद रख सकते हो through district like SB4. कौन से? सियाचिन ग्लेशियर. So important glaciers के नाम है like सियाचिन ग्लेशियर्स, बाल्टोरो, ब्रादो, बियाफा एंड बेटुरा. ये ज्योग्राफी एंड यू में आपको मिलेगा. ठीक है. So the काराकोरम रेंजेस पे important glaciers हैं सियाचिन, बाल्टोरो, ब्रादो, बियाफा एंड बेटुरा. On the another hand, लद्दाख प्लेटो की बात करेंगे. So लद्दाख प्लेटो को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है. That is trick is एल्दास. क्या क्या ट्रिक्स है? लिंजितांग, दिपसांग, अक्षय चीन,
एंड सोडा प्लेन। ठीक है, याद तो हो ही क्या होगा, दैट लिंजितांग, दिक्सांग, अक्षय चिन एंड द सोडा प्लेन्स। ठीक है, और दो हमेशा न्यूज में क्या रहता है, पांगोंग सो एंड सो मोरेडी, पैंगोंग सो एंड सो मोरेडी। सो ये क्या है, सलाइन लेक्स है ये लद्दाख। सो पैंगोंग सो के बारे में एक चीज याद रखिए, दिस इज एन इंटरनेशनल लेक। ठीक है, ये इंटरनेशनल है। और सो मोरेडी कंप्लीटली कहां लाई करेगा, इंडिया पे। व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल, बिकॉज इसका 1/3 पार्ट सिर्फ इंडिया में है और इसका 2/3 पार्ट कहां पर है, चाइना में। सो पैंगोंग सो इज एन इंटरनेशनल लेक, ओके, इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक। सो दिस is the most important because यहाँ पर conflict भी हुए थे इंडिया चाइना, and that is why it's a part of the current affairs. Now let's move and see some of the important peaks in the mountain system. That world highest peak is the Mount Everest. What is the height? 8,848 मीटर, but according to certain news 8,849 मीटर, 1 मीटर बढ़ा है। Okay, so up 4-5 आप याद रखना। सेकेंड इज योर द K2, दैट इज कॉडविन ऑस्टिन, ओके, 8,611 मीटर। देन आफ्टर दैट कंचनजंगा 8,586 मीटर, एंड आफ्टर दैट देयर इज धौलागिरी, दैट इज मनासुलू, नागा पर्वत एंड अन्नपूर्णा। यू रिमेंबर ऑल दीज। सो इन दिस ऑर्डर आई हैव ऑर्गेनाइज्ड ऑल द माउंटेन पिक्स हियर। सो इट इज द ड्यूटी दैट यू शुड रिमेंबर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट, ओके। सो these all mountain peaks you will get in the Himalaya system. Now friends, one of the very important topic that is river system, और इससे हर साल और हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। The India Yearbook say that the river systems of India can be classified into 4 major groups. These are the Himalayan river, Deccan river, coastal rivers and the rivers of the inland drainage basins. ठीक है, that the rivers can be classified into Himalaya system, Deccan river system and the coastal rivers and the rivers of the inland drainage basins. हमेशा ट्राइब्यूटरी के फॉर्म में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। लास्ट ईयर दे आस्क्ड अबाउट द व्हाट आर द ग्लेशियर्स फ्रॉम द सिस्टम द रिवर सिस्टम हैड ओरिजिनेटेड। सो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सो हियर यू ट्रस्ट ऑन दैट इंडिया ईयरबुक। सो यू लुक एट दिस मैप, इट इज द इंपॉर्टेंट रिवर्स आर डिपिक्टेड हियर। यू ट्राई ऑल्सो टू फाइंड आउट व्हाट आर द रिवर्स, कौन कहाँ से बहता है, व्हाट इज द कोर्स ऑफ द रिवर, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। सो दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और ये सारे पेनिनसुलर ब्लॉक्स हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ लाइक नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। सो इसको आप अच्छे से पढ़ना, यू प्रैक्टिस एट होम अलॉन्ग विथ ऑल्सो यू रिमेंबर द ट्रिब्यूटरीज। गंगा रिवर सिस्टम का मैंने ट्रिब्यूटरी ऑलरेडी बताया है, लेफ्ट में राम की 3 गली, राइट में यस कल से पापा फिल्म देखेंगे। और भी रिवर सिस्टम के ट्रिब्यूटरी इन द subsequent classes will going to discuss. Now friend, one of the very basic question कि what is the source from where the river basically originated? So उसके लिए एक tricks है, actually one of my teacher has told me, so I got a chance to share all of you guys that कुछ important river systems के tricks को आप कैसे याद रख सकते हो through this poem, okay? So this poem will try to incorporate almost important rivers and their origins. The poem is like that. The सारा इंडिया मान गया, रावण कुल को जान गया, बेकार रोप जमा न पाया, झेला बीरता से सब कुछ लेकिन चमत्कार विनय का रोक न पाया, नर था वो अमर सो बन गया कांटा, तब से बेबस किया महाकाल शिव को, लिया आराध्य से वरदान, घटे न सिर जब छटे ये कभी इस ब्राह्मण का हे भगवान। इट इज समथिंग लाइक द रामचंद्र एंड द रावण के बीच का डायलॉग है, एंड दिस पोएम इज वेरी हेल्पफुल। इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑलमोस्ट ऑल द रिवर सिस्टम एंड देयर ओरिजिन। लाइक द फर्स्ट रिवर इज द नेम, फर्स्ट टर्म जो होगा वो नेम ऑफ द रिवर होगा, सेकंड जो होगा वो उसका ओरिजिन होगा। लेट अस अप्लाई दिस ट्रिक। लाइक दिस सारा, दैट इज S for the Satluj river system, and that Ra for Rakas lake. Ra for Rakas lake. India, here Indus, and it originated from Ma, that is Mansarovar. Okay, it originated from Mansarovar. So Ra, Satluj, Rakas, Indus, Mansarovar, Ravi. Ra for Ravi, it is started from Kullus, originated from Kullu Valley. Okay, then Bias from Rohtang Pass. Jhelum river from Verinag spring. ठीक है, similarly you get Chambal from the Vindhyachal ranges. ठीक है, Narmada that is from Amarkantak,
Son is also from the Amarkantak. ठीक है. Tapi river system, Tapti, it originated from Betul district. Here Mahakal for Mahanadi river, it originated from Sihawa district. Okay. L for Luni river, it originated from Aravallis. Ghate na sir jab chhate ye, that is your Ghaggar river from the Sivalik, and this Ka for Kaveri river from Brahmagiri hills. Okay, so in this way it works. Okay, so friends, all I have written here, that is, first it is the name of the river, second is the origin or source. Okay, so Satluj river from the Rakash lake, Indus river from the Mansarovar, Ravi river from the Kullu hills. Okay, Byas river from the Rotang pass, near Rotang pass, Byaskund. Jhelum river from the Verinag spring, that Chambal river from that Vindhyachal, okay, that and for Narmada river from that Amarkantak, Son river from the Amarkantak, Tapti or Tapi river from the Betul district, okay, then Mahanadi river, that is from the Sihawa district, then Luni river, Rajasthan, from Aravalli ranges, then Ghaggar river, okay, then from the Sivalik ranges, the Kaveri river from the Brahmagiri hills. So friends, along with me, you must murmur all this poem. Okay, so सारा इंडिया मान गया, रावण कुल को जान गया, बेकार रोग जमा न पाया, झेला वीरता से सब कुछ, लेकिन चमत्कार विनय का रोक न पाया, नर था वो अमर सो बन गया कांटा, तब से क्या बेबस महाकाल शिव को लिया आराध्य से वरदान, घटे न सिर जब छटे ये कभी इस ब्राह्मण का हे भगवान. So rivers are covered. I would try to make it simpler. So now let's move further. So friends, all those rivers whatever left in this poem, आप यहाँ से भी याद रख सकते हो. तो सतलज river originated from the Mansarovar Lakas Lake, Indus from the Mansarovar near, okay, so Ravi river from the Kullu hills, Byas river from the Byas Kund, the Jhelum river from the Verinag spring, Yamuna from the Yamunotri glacier, Chambal from the Vindhyachal ranges, Ghagra river from the Tibet, Betwa from the Vindhyachal ranges, Son from Amarkantak, Brahmaputra from Mansarovar, Narmada from that Amarkantak, Tapi from Betul district, Mahanadi from the Sihawa district, Luni river from Aravalli, okay, then this Ghaggar river from the Sivalik, Krishna river from Mahabaleshwar, that is Western Ghats, Kaveri river from Brahmagiri hills, Western Ghats, Godavari from Trimbak, okay, that is Maharashtra Nasik, okay, and Tungabhadra river from the Western Ghats. Friends, which river is known as Dakshin Ganga? It is Godavari. Okay, so Godavari river is known as Dakshin Ganga. ये आप याद रखना. That Godavari river is known as Dakshin Ganga. And from where Godavari originated? From the Trimbak, Maharashtra. Okay, Trimbak plateau. So इन सबको याद रखने का ट्रिक था, और that was the poem. Or try to remember it. Otherwise, you remember it your own convenience from this chart. और जितने भी important the sources हैं, I have written here. You can simply download from your the Telegram all these facts. Okay. So friends, this is the first part. We will take up the subsequent things in the next part. That is part 2 of this chapter, Land and the People. This chapter is very potential. Okay. And try to incorporate all the things whatever you read in the geography. ये आपके concept को boost up करेगा. And what are the important and relevant things? What should you read? You should read from this book. I try to present before you. Okay. So you must read about the geological structure. You must also read about the physical division. And with respect to the Himalaya system, Himadri, Himachal, Sivalik and Trans-Himalaya. In the Trans-Himalaya, that is Karakoram and the Ladakh ranges, you must read. Then you reach to the Purvanchal hills. In the Purvanchal, you will get the PNB, MLM. Then that is your DMAM. Okay, ये सारे order में है. Already I have told you that is your Dafla, Miri, Abhor, Mismi, all these. These are the name of the tribes as well. You remember. After that, most important part, that is the river system. एक tricks मैंने आज बताया to remember the origins and the source of the river system. In the last class, Ganga river के tributaries already हम बता चुके हैं. Then Jamuna and other river system के tricks के साथ tributary in the subsequent class में I will told to all of you. मैं सारी चीजें share करूँगा. One thing I urge to all of you, that you make the judicious use of your the time, do practice at home and try to cover this India your book as soon as possible. Okay, and our lectures will help you as much as possible. We are trying to put up the things as simple as possible. So you friends, you must revise and in सबको याद रखना. You have to practice a lot to keep for the longer period of the time. Okay, so with these words I am concluding the first part, and we will again appear with the second part and we will take up the rest of the concepts. So I hope that you guys must have enjoyed it. This session must be informative and
that thanks for the watching, and that we will again meet with the next class on next topic. So you stay safe, stay healthy, and have a nice day.